So welcome back. This is the second class, and this is the second video on the chapter Rebels and Raj from class 12 NCERT. So last wale video mein we have done the first part of the Rebels and Raj chapter. This video is a continuation for the second part of it. So those who have not seen the first part, please go back and check out the first video of Rebels and Raj part 1 and then come on to this video to make a better sense of the things that we have done. So in today's video, we are going to do the patterns of rebellion, right? कि rebellion का pattern क्या था, कैसे हुआ, कैसे फैला, the course of rebellion, otherwise we could call it as course of rebellion, right? So हमें पता है कि सिपाही म्यूटनी शुरू हो चुका था बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने refused to use the catfish that was led with pig and cow fat, which was led, and further he decided that he is going to refuse and fight back. So he killed one of the officers, and later Mangal Pandey was also killed in this entire scenario. By this time, the actual revolt started in Meerut, where the rumors have been spread, the things have been known by the soldiers who are living in the Meerut, right? So the first thing here, we'll come on to it. So if you see, afternoon of 10th May, it started, right? So afternoon of 10th May, it started. The sepoys in cantonment, that cantonment is basically the army area. In the army area, the rumors spread and the soldiers or the Indian sepoys are ready to fight back, right? And the entire Meerut broke out in mutiny. That means that they have started the mutiny, they have started the rebellion. So if you see, the first initial phase is that the infantry, right? So native infantry is basically the foot soldiers. So infantry mein foot soldiers started the rebellion, and later on it swiftly spread to the cavalry. Cavalry is basically the horsemen, right? Horsemen or the horse soldiers. So if you see, infantry and cavalry both have started their mutiny, and then this mutiny started spreading towards the city, राइट यानी मीरठ में इन्फेंट्री के लोगों ने और कैवलरी के लोगों ने दोनों ने फाइट बैक करना शुरू कर दिया और ये आगे चला जा रहा है। अब ये जो रेबेलियन है तो सोल्जर्स ने शुरू कर दिया है, बट इतने टाइम में क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी पीपल थे सिटीज वगैरह के, टाउन्स के और जो नियर बाय विलेजेस के लोग थे, they were also able to understand the reason why the soldiers are rebelling. They were also facing a lot of issues. So what they did was they joined the sepoys. यानी कि सिटी के लोग, टाउन्स के लोग, रूरल एरियाज के लोग जो कि who had emotional connect or who understood the problems of the sepoys have started joining them, and now it has been from just a regiment of sepoys, it has been people who are adding up as an entire group, right? So आगे देखिए sepoys ने किया क्या. Sepoys captured the bell of arms, right? Bell of arms is a place where the guns and the what do you call, weapons have been stored, right? So it's a go down kind of a thing wherein the arms have been saved or the stored, right? So if you go further, you will see that the arms and ammunitions were kept, were attacked by and attacked so that they would these sepoys will have arms to fight back the British, and they also when they are marching towards Delhi, right? Before this, they have a clear plan. They are going to march towards the Delhi area. So what they did was they started burning the bungalows and the property of the British. यानी कि जो bungalows और property है British के उनको destroy करने लग गए, arms को लूट लिया है, powerful हो गए हैं, और उसके साथ जो local people है, right? The local masses also joined them, so giving strength to the rebellion, right? So if I move further to the next slide, so I hope this has been clear. So 10th afternoon, 10th May afternoon 1857 को ये rebellion actual sense में मीरठ में शुरू हो गया. So the first place where this entire thing broke out is Meerut, and from here the Meerut soldiers are going to march towards Delhi. अब उसका भी reason है. So the second place they will reach is Delhi. अब मीरठ से जाते वक्त उन्होंने बहुत सारी चीजें की है, right? So what they did was the government buildings, the record office, jail, court, post office, treasury, etc. were destroyed. ये सब British की बनाई हुई थी, and anything that has been made by the British is been seen as a symbol of British.
And in order to destroy the British, they started destroying these properties and they started plundering it. लूटने लग गए उसको, right? सबसे बड़ी चीज उन्होंने की, the telegraph line to Delhi was cut, right? So that मीरठ से दिल्ली की तरफ को ये इंफॉर्मेशन ना दिया जाए कि जो सिपाहीज है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं या उसकी तरफ को रुक कर रहे हैं. So the communication here was broken by the sepoys, right? और रात के अंधेरे में अब sepoys started marching towards Delhi. The sepoys reached at the gates of Red Fort in the early morning of 11th May, यानी 11 मई को. So 10 को शुरू हो रहा है and they reached on to the gates of Red Fort by 11th May, right? So रात को निकल गए और सुबह वो दिल्ली पहुंच रहे हैं. अब रेड फोर्ट में इस टाइम पे द मुगल रूलर बहादुर शाह जफर वाज देयर, राइट? बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल रूलर, शाह जफर वाज देयर. एंड जो सिपाही थे वो गए बहादुर शाह जफर के पास. उन्होंने रिक्वेस्ट किया बहादुर शाह जफर को. बहादुर शाह जफर वाज इन हिज ओल्ड एज, काफी बूढ़े हो चुके थे. He was very weak, but the sepoys' motivation and everything made him to give sanction to the soldiers that I am going to be your leader, right? So he accepted and बोले कि भाई मैं तुम्हारे revolt को lead करूंगा. So sepoys were happy. They were happy that they were able to convince the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to fight back the British. So what they did was all the soldiers proclaimed the Bahadur Shah Zafar as the Mughal emperor, as their ruler for the revolt. Let's move further. So when the ordinary people began to join the revolt, the targets were widened, targets of attack widened, right? So initially it was sepoys, then later on many people who were not very happy with the British joined the rebellion. और जैसे ही उन्होंने rebellion को join किया, what they did was they started attacking. Now it's not just the sepoys, the other category of people who have joined the rebellion have started attacking the entire British property, the symbols of British, they have started destroying, right? So if you see in major towns like Lucknow, Kanpur and Bareilly, what is happening is that the money lenders, right? Money lenders and the rich became the objects of rebels, what do you call it? Hatred or the wrath, right? So if you see here, लखनऊ कानपुर बरेली में क्या हो रहा है, जो मनी लेंडर्स वगैरह थे और जो पैसे वाले लोग थे, जो ब्रिटिश के सपोर्टर्स थे, उनके ऊपर भी अब रेबल करने वाले सिपाहीज और जो नॉर्मल जो मासेस जुड़ी है उनके साथ, दे स्टार्टेड अटैकिंग देम. अब यहाँ पे रीजन था मनी लेंडर को अटैक करने का. मनी लेंडर वाज ऑलवेज ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिंग फॉर द पेजेंट्स, राइट? पेजेंट जब भी अपना वो टैक्सेस पे करना चाहता है या अपना क्रॉप लगाना चाहता है तो वो मनी लेंडर के पास पहुंचता था पैसे लेने के लिए. मनी लेंडर यूज्ड टू चार्ज रियली हाई अमाउंट एज द इंटरेस्ट, राइट? तो कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड्स में फर्जी रिकॉर्ड बनाना, करप्शन वाज देयर, and they were not able to get they were not able to get the exact amount, right? So if I have taken 100 rupees, I need to return probably 110 with the interest, right? But these money lenders made it 150, 200, 300 on their wish, right? So the peasants were actually seeing these money lenders as somebody who was oppressive. So what they did was, in most of the places, their houses were attacked, they were looted, उनके जो भी सामान है, महंगी चीजें, उनको लूट लिया गया और उनके जो जहां रहते थे उनके हाउसेस वगैरह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, राइट? सो इन slowly सिपाही रैंक से ये become this entire movement or this entire thing became a big rebellion, right? अब देख लीजिए, इन 2 months जो थे, 2 महीने जो थे, मई और जून का महीना, वहां पे द ब्रिटिश हैड नो आंसर फॉर द एक्शन ऑफ रेबल्स, राइट? सो यानी कि रेबेलियन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है. So the rebellion was strong and British had no answer for the rebels. They are trying to protect themselves at this point of time. One of the Britons, right, one of the person who belonged to Britain said that they were trying to save their own lives and lives of their families, right? So that means that the mutineers or the
rebels were actually attacking the families of the British and the British, uh, and it was going very bad for the British, right? One of the British officer said a popular statement. He said that our entire rule, right? He said that our entire rule collapsed like a house made of cards. यानी कि हमारा जो सारा रूल था, जो हमारा रूलिंग पावर था, वो ताश के पत्ते की तरह, राइट? जो घर बनाते ताश के पत्ते, उसकी तरह सारा बिखर गया. So this itself shows that rebellion is very very strong. एंड इसका कोई जवाब नहीं था ब्रिटिश के पास इनिशियली. कुछ मंथ्स तो उनको भी लगा समझने के लिए, अरे हुआ क्या है, right? Now, if you move further, there was similarity in the pattern of revolt in different places, and there was planning and coordination. So those who say that there is no planning and coordination, there was planning and coordination, even if it's not on the best, but there was planning and coordination among the soldiers, right? So ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा हो रहा है, and little later the British will come in to kind of suppress this revolt, right? Now we are moving on to the next slide. अब इस पूरे रिवोल्ट को इतना बड़ा करने के पीछे रूमर्स एंड प्रोफेसीज का बड़ा हाथ है, राइट? सो रूमर्स ने क्या किया? रूमर्स ने एक्स्ट्रा हेट्रेड लोगों के, डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियंस के मन में डाल दिया, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस रूमर्स को सच मान गए, इंडियंस, एंड दे स्टार्टेड टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश. So one of the rumors was the new cartridge, right? So the new cartridge and the Enfield rifle, right? We have done this in the last video. So Enfield rifle के जो cartridges थे, जिसको grease किया गया था pig and cow के fat से, जो कि हिंदूज के लिए और मुस्लिम्स के लिए alike एक problem थी, and this would pollute their caste and religion, right? So this was the first rumor which kind of added to this entire rebellion. If you further see, there was another rumor that the British has been trying to mix the bone dust of cow and pigs, right? कहाँ पे? उनके आटा में, flour में, right? So so this is another rumor that was spread, that in the atta, the bone dust of cows and pigs were kind of mixed, and this somewhat was kind of attacking on the religion, right? And this rumor spread very fast, and kind with Enfield rifle, this became a very important thing. There was another suspicion amongst the Indian soldiers now, right? Or basically the Indians. The British is trying to convert Indians to Christianity, into their religion, and that is why there is a lot of Christian missionaries who have been coming to the barracks of soldiers and all, and a lot of missionary activities happening in India at this particular point of time. So there was a fear and suspicion that they will be converted to Christianity, and they have to leave their original religion, that is Hinduism and Islam, right? So this kind of created, these rumors played very important role. इस rumors की वजह से बहुत strong हो गया rebellion. लोगों को लगने लगा यार ब्रिटिश एक हद तक ठीक था. They are trying to pollute our religion. They are trying to destroy our religion, and this is how they are moving further. So let's move on to the next one. So अब आगे बढ़ते हैं and देख लेते हैं. One of the main reason, another thing was Western education. ठीक है, social reforms. Social reforms में हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था? सती को abolish कर दिया था, female infanticide को बंद कर दिया था, right? कहीं ना कहीं conversion के लिए कर रहे थे. So ये सारे जो social reforms जो थे were not taken very gratefully by the Indians, right? And if you see the Western education, the Indians were inclined towards their traditional subjects like Sanskrit or the languages, okay, and rest of the things. But here, the British were forcefully trying to kind of give them Western education, which has made the Indians further suspicious about their activities, right? Social religious reform करते वक्त उनको लगा कि भैया ये हमारे जो basic customs है, religion की चीजें, इसमें क्यों interfere कर रही है? Christian missionaries का role created doubt and discomfort amongst the Indians. यानी कि Christian missionary जो भी इंडिया में कर रही थी, उससे भी बहुत suspicion आ गया था Indians के मन में. And then they were doing a lot of annexation using doctrine of lapse, subsidiary alliance. ये भी कहीं ना कहीं British के intentions
regarding India को question कर रहा था, right? The intentions of British was questioned because of their policies that they were following in India, doctrine of lapse या subsidiary alliance, right? So let's move another one. अब यहाँ पे हम subsidiary alliance कर रहे हैं. मेरे पिछले वीडियो में भी I have made the entire, I've told you what is subsidiary alliance, right? So this is subsidiary alliance, and we are studying here subsidiary alliance because we are going to study about Awadh, right? The annexation of Awadh, which was done through the subsidiary alliance. So if you see, during this particular time, who introduced it? Lord Richard Wellesley. In the last video also I have mentioned about him. Lord Richard Wellesley has came up with the system in 1798. And in this system, what was there? There was an alliance between British and the Indian Kings Acts has to do an alliance with the British, right? And there were certain terms and conditions that needs to be followed. The British would be responsible for protecting their ally, right? So British told the Indian kings, sir, we will be saving you from all kind of what do you call problems by providing our best army to you to deal with it, right? So if you're fighting a war, we will be fighting with you. So this kind of alliance was given, and it in the territory of allies के जो टेरिटरी है वहां पे कंटीजेंट्स को पोस्ट कर दिया जाता था, यानी कि ब्रिटिश ट्रूपर्स को पोस्ट कर दिया जाता था और वो ब्रिटिश ट्रूपर्स फिर वहीं रहते थे. बट इसके पीछे जो क्लॉज था, द एलाई द किंग हैज टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटीजेंट. इस कंटीजेंट को कहीं ना कहीं मेंटेन करना था इस किंग को. तो कैसे मेंटेन करेगा? इनकी वेजेस देगा, इनका फूड, इनका रहना, इनकी यूनिफॉर्म, इनकी अगर कोई ट्रेनिंग होती है, जो भी है, उन सारी चीजों के लिए पैसे जो देगा वो किंग देगा. अगर किंग फेल्स टू पे दिस एंटायर अमाउंट, then the same troop is going to, or the same force of British which has been stationed in the kingdom is going to annex some part of the kingdom, right? And this was one of the annexation policies, right? So you have to also remember that there was a British resident who was posted with the British army. जो British army थी, it never used to take any command from the king. Instead, it always used to take the command from the British resident. So अगर कोई war लड़ना है, तो British resident अपनी army को बोलेगा कि हाँ भैया war लड़ो. King का उसके ऊपर कोई control नहीं था. This was the best thing or the hidden thing that was happening, right? King को लगा कि मैं directly troopers को बोलूंगा या अपने army को बोलूंगा जो British ने दिया है to fight, so they will fight. No, the king has to take sanction from the British resident, and then only the British resident will tell the army to fight or do not fight, whatever, right? So कहीं ना कहीं ये पूरी फोर्स ब्रिटिश रेसिडेंट के अंडर आती है. अब देख लीजिए, डलहौजी साहब जो है उन्होंने एक बार बोला था. अब हम अवध की तरफ जा रहे हैं. अवध वाज सीन एज अ वेरी व्हाट यू कॉल गुड प्लेस फॉर एग्रीकल्चर एंड बहुत सारी चीजों में अवध वाज स्ट्रेटेजिकली भी बहुत सही जगह थी. सो ब्रिटिश ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर अवध, राइट? सो अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी बोलते ये चेरी है. अवध इज अ चेरी, ठीक है, जो फ्रूट हो गया चेरी, that will drop into our mouth one day. यानी कि अवध एक फ्रूट है जो कभी ना कभी हमारे मुंह में आएगा और हम उसको खा जाएंगे, right? So here it shows Dalhousie's intention to annex the Awadh as a place. So if you see, Awadh was formally annexed by the British Empire in 1856 by Lord Dalhousie. ठीक है, Lord Dalhousie ने किया था. The conquest happened in stages. अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 1801 में क्या हुआ? सब्सिडरी अलायंस लगा दिया, यानी कि वो एलाई बना दिया अवध के राजा को और बोला सर ब्रिटिश आर्मी देंगे. लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया? उस किंगडम को एनेक्स कर लिया. क्यों कर लिया? क्योंकि जो राजा था he was not able to maintain the army. तो अवध के कुछ पार्ट्स को इनिशियली 1801 में अंडर 1801 में वो कुछ जो पार्ट्स थे उसको ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस की वजह से एनेक्स कर लिया गया था. अब ये इतना बढ़िया था ये एरिया कि ब्रिटिश फेल्ट वेरी ग्रीडी अबाउट इट, राइट? सो लेटर ऑन what happened is this entire Awadh, which was ruled by the ruler Wajid Ali Shah. वाजिद अली शाह रूल कर रहे थे उस टाइम पे. वाजिद अली शाह को ब्रिटिश ने बोला कि सर आप जो रूल कर रहे हैं आपका रूल मिस गवर्नेंस है,
That means that you are not ruling the kingdom as it needs to be ruled. और इसी मिस गवर्नेंस की वजह से आपको आपके पोस्ट से हटाया जाता है और the entire Awadh is being annexed, and this was annexed in the year 1856. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वाजिद अली शाह was a very popular ruler among the masses. जब वाजिद अली शाह के साथ ये हुआ तो अवध के लोग बहुत बुरा मान गए इस बात का, because they loved their emperor, their king, right? So their Nawab, right? So आगे चलते हैं. ब्रिटिश वर कीन टू अक्वायर अवध. उनको अवध चाहिए था. क्यों चाहिए था? इसका सॉइल बहुत अच्छा था. और क्या ग्रो करने के लिए अच्छा था? इंडिगो और कॉटन. कहीं ना कहीं ये ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल था. यानी कि अगर अवध को कहीं ना कहीं कॉन्कर कर लो, एनेक्स कर लो, तो आप इंडिगो ग्रो कर सकते हैं, कॉटन ग्रो कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस. तो रॉ मटेरियल्स उनको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा. बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर दीज थिंग्स, right? So what they did was uh, they annexed the Awadh on the grounds of maladministration, यानी कि rightly function नहीं कर रहा kingdom king के under. इसलिए नवाब वाजिद अली शाह बहुत ही उनके हिसाब से, ब्रिटिश के हिसाब से बहुत अनपॉपुलर रूलर थे. But on the other terms, he was actually widely loved ruler by his people. राइट. तो बोला कि सर आपके क्या मैल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मिस गवर्नेंस चल रहा है, तो हम लोग तो भैया अवध को कॉन्कर कर रहे हैं. एंड दे काइंड ऑफ कॉन्कर्ड द एंटायर अवध. एंड वाजिद शाह अली वाज सेंट टू एग्जाइल, and he was sent to exile in Calcutta. Yeah, absolutely. Here it comes. Wajid Ali Shah was displaced and exiled to Calcutta, but he was very admired. How do we get to know that? तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, how do you get to know that he was admired by the people? So if you see, when he was sent to exile, right, all the way to Kanpur, singing songs of lament, right? The people came together and they kind of sang songs and was following the ruler till particular what do you call it, area, right? तो कुछ कंटेम्परेरी राइटर्स ने इसको लिखा भी है. इन्होंने बोला है कि जो ये पूरा एक्सपीरियंस है वाजिद अली शाह का और जो सब्जेक्ट्स का, उसके लोगों का जो एक्सपीरियंस है उनको लिखा है. तो कुछ लोगों ने जो कंटेम्परेरी राइटर्स है उन्होंने बोला है कि लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर में से जो जिंदगी थी वो निकल चुकी थी. बॉडी ऑफ हिज टाउन हैज बीन लेफ्ट लाइफलेस, यानी कि जो अवध है अब लाइफ के बिना जा रही है, राइट. kind of this shows the love and affection received by Nawab Wajid Ali Shah, right? Nawab Wajid Ali Shah. But if you see, this was the perspective of the Indian people who were living in in Awadh. But if you see the perspective of British, he was very unpopular. He was very unpopular ruler, which was actually wrong. So initially, this Awadh was captured by subsidiary alliance. Then later on, it was captured on the opinion that it was maladministration, yeah, misgovernance that has been happening in Awadh, right? सो द यहाँ पे जो आपको लाइन याद रखनी है वो यही वाला है. इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते भी है और आगे भी बन सकते हैं. Who said this popular line? The question could come. ठीक है, Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. Who said these lines? Right? So this is very important to know. Let's move on to the next part, which has been displacement of तालुकदार. अब हम आ रहे हैं. तो अब तक हमने पढ़ा कि सिपॉयज अनहैप्पी है, आर्टिसंस अनहैप्पी है. फिर हमने पढ़ा आर्टिसंस के अलावा और कौन कौन अनहैप्पी है. द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर अनहैप्पी. ठीक है, द पीपल हु आर फॉलोइंग इस्लाम आर अनहैप्पी. Then if we see, some of the kings are unhappy because of the annexation policy. ऐसे one more section who was unhappy was Talukdars. Talukdars are basically rich
landlords. So talukdars were there in India, one particular section who had a lot of lands with them, and they were kind of an important personality in the rural India, right? तो अगर तालुकदास का देखो तो तालुकदास की बहुत सारी चीजें थी. अब पहले आ जाते हैं annexation of our displaced not only the नवाब बट ऑल्सो द तालुकदार. ठीक है, तो नवाब को सिर्फ नहीं, तालुकदार को भी ब्रिटिश ने डिस्प्लेस कर दिया, ये देख के कि these people are quite powerful, right? And इनका पावर और माइट कम करना बहुत जरूरी है, right? So what does Talukdar had? Talukdar had many estates, they had their own forts, and they held power for generation. यानी कि जनरेशन से ये क्लास बहुत पावरफुल है, उनके अपने महल है और जगह है, लैंड है जिसपे पेजेंट्स काम करते हैं. So they kind of are the people who enjoyed autonomy, right? Yani ki they are people who enjoyed certain degree of power in the places where they were there, right? And kind of they accepted the power of Nawab also. So Nawab gave them the opportunity, because they accepted the Nawab as the ruler. The Nawab gave them the opportunity to have that power with them, to have that power and rule the rural India, right? So these Nawabs, these Talukdars actually paid revenue to the British, right? But many Talukdars, if you see, they had 12,000 foot soldiers, so they had their own army also. The smallest Talukdar, the smallest Talukdar will have an army of around 200 people, and the biggest will have somewhat around 12,000, right? So this itself shows that there was different levels of talukdars. The more powerful one will have somewhat around 12,000 people in his army. So the British were quite suspicious and were insecure about the powers of talukdars. They knew that if talukdars are ruling, it would be very difficult to kind of take over the entire rural area. Rural area से taxes आना था, और वो टैक्सेस अपनी मर्जी से बढ़ा और घटा नहीं पाएंगे अगर तालुकदार रूल करेंगे तब, राइट? सो व्हाट दे डिड वाज दे annexed the property of तालुकदार, disarmed them, यानी कि उनके ट्रूप्स जो उनके लोग थे, टुकड़ी थी, उसको भी डिसआर्म कर दिया, and their forts were destroyed, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने तालुकदार पे अटैक करना शुरू कर दिया, and they also came up with certain laws जिसकी वजह से तालुकदार को अपना लैंड भी खोना पड़ा. So I am coming here on Summary Settlement Act, very important. ठीक है, it is important, very important. Summary Settlement के Act के हिसाब से what has been there was Talukdar, they believed, the British believed that Talukdars had acquired the land by force and fraud, thus have no permanent rights over their land. यानी कि तालुकदार ने फ्रॉड करके इस पूरे एरिया को, जो लैंड उनके अंडर है, उसको कैप्चर किया या अपने पास रखा हुआ है. ये फ्रॉड से किया है, करप्शन से किया है, ये फोर्स से किया है, धमका के किया है, ठीक है. और इसकी वजह से इनके पास एक्चुअल राइट्स नहीं है टू बी द रूलर्स ऑफ द लैंड, राइट? जो लैंड उनके पास है, वो उसका रूलर बनने के लिए इनके पास एक्चुअल राइट्स नहीं है. ये एक्चुअल राइट्स एक्चुअली उन लोगों के पास होना चाहिए जिनका ये लैंड है. सो दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द पावर, ठीक है. और टोटली अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पीरियड में 67% ऑफ तालुकदार्स वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर एक्चुअल राइट्स. लैंड राइट्स के ऊपर से उनको हटा दिया गया, 67% के ऊपर ये समरी सेटलमेंट लगाया गया, और अब वो अराउंड 38% बच रहे थे, राइट? सो दिस वाज अनदर थिंग. लेट्स मूविंग. सो अब ब्रिटिश क्या बोलती थी? ब्रिटिश बोलती थी कि भैया तालुकदार को अगर हम हटाते हैं इससे, तो तालुकदार का जो लैंड है विल बी गिवन टू द रियल ओनर्स ऑफ द सॉइल. ठीक है, वो कहते थे कि भाई तालुकदार बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है पेजेंट को, ठीक है. और कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेटिव रेजिम जो है, यानी कि तालुकदार जो भी सितम कर रहा था पेजेंट्स के ऊपर, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. दिस वाज अ स्ट्रेटजी दे हैव यूज्ड. दे एक्चुअली वांटेड रेवेन्यू रिटर्न्स टू द स्टेट दैट शुड बी हाई. वो चाहते थे कि हम तालुकदार को हटा दे और उसके बाद हम रूल करें उन लैंड को,
और पेजेंट्स को बोले कि भैया टैक्सेस बढ़ चुके हैं, इतना टैक्स आपको पे करना है। और जबकि रीजन क्या दिया जाता था, बोलते थे कि भाई हम पेजेंट्स के ऊपर कोई जाति नहीं होने देंगे, ताल्लुकदार उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दिस वाज टोटली absurd or totally what do you call a wrong reason that is been given. But what happened is जैसे ही ताल्लुकदार को हटाया, रेवेन्यू को इंक्रीज किया, द पेजेंट्स बर्डन इंक्रीज। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं तो ताल्लुकदार के नीचे द पेजेंट्स वर क्वाइट हैप्पी। उस उनका टैक्सेस जाता था बट टू ए लिमिट जाता था। ताल्लुकदार और पेजेंट के बीच में अच्छे रिलेशन भी थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, राइट। जो ताल्लुकदार था एट टाइम्स कंसेशन दे देता था, उनको टाइम दे देता था पे करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश के अंडर these peasants were totally unhappy because the taxes has gone high. There was no concession, no extra time that was given for these people, peasants, to pay. So somewhere this entire thing has been going wrong against them. So soon, अब देख लीजिए कुछ साल बाद ऑफिशियल्स ने सर्वे किया, उनको पता चला अरे यार फ्रॉम 30 to 70% अवध को हेविली एसेस किया गया था। यानी कि जो अगर 30% था टैक्स अवध का, ब्रिटिश के अंडर वो 70% हो गया और ओवर टैक्सेस लिए गए। ये एक्सेप्ट किया है ब्रिटिश ने, ये हमने अवध से लिया है, ठीक है। अगर 70% तक टैक्सेस गया है, थिंक अबाउट द कंडीशन द पेजेंट्स हैड देयर। तो पेजेंट्स का तो जिंदगी वहां पे बहुत ही खराब गया है। सो so this is the next part. So with the removal of तालुकदार क्या हुआ, peasants डायरेक्टली हार्श रेवेन्यू के अंडर आ गया, जो कि इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिश भैया ने, ठीक है। ब्रिटिश के रेवेन्यू के अंडर आ गया। बेचारे वो पहले जाके तालुकदार से लोन ले लेते, मनी लेंडर से लोन लेके अपना काम चला लेते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रॉप फेलियर होता था तो कोई कंसेशन नहीं मिलता था। अगर आपका क्रॉप हो नहीं हो वो उनका सरदर्द नहीं है। यू हैव टू पे द टैक्सेस and you cannot evade paying taxes at any cost, right? So they were not able to pay the taxes because crop failure होता था, famine हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, rain नहीं हो रहा है, right? और भी natural calamities की वजह से। तो ये जो था, ये तालुकदार के अंडर इनकी सिचुएशन बेटर थी, क्योंकि तालुकदार कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड था and he knew the condition of the peasants. तो अब जो देखिए रेवेन्यू पोस्टपोन्ड और फेलियर हो जाता था अनफोर्सीन कंडीशंस की वजह से, ठीक है। अब आगे है कि लॉयल्टी एंड पैटर्नेज हैज बाउंड द पेजेंट्स टू तालुकदार बट इट वाज डिस्टरप्टेड, राइट। कहीं ना कहीं तालुकदार से जुड़ा हुआ था पेजेंट, लेकिन ब्रिटिश ने इस सिस्टम के अंदर आके इन दोनों के रिलेशन को खत्म कर दिया। तालुकदार को तो हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, बाहर निकाल दिया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब बेचारे पेजेंट का कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है ब्रिटिश के साथ, एक ही कनेक्ट है, वो है टैक्स पेइंग कनेक्शन, ठीक है, रेवेन्यू सेटलमेंट देना है। and because of all this the condition of peasants was uh, actually was bad, ठीक है। So I what we will go back quickly to all these slides to check what we have done today and we will finish this class here. This was the second part. So अगर पहले आ जाए तो पैटर्न्स ऑफ रेबेलियन में आ गए। पैटर्न ऑफ रेबेलियन में क्या हुआ, मीरठ में रिवोल्ट शुरू हुआ, देन इट स्प्रेड टू इन्फेंट्री, फिर वो कैवलरी में फैल गया, एंड देन दे वर जॉइंड बाय द लोकल मासेस। उसके बाद उन्होंने लूटा आर्म्स और एमिनिशंस को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, अटैक करने लगे ब्रिटिश सिंबल्स को, चाहे उनका कोई भी प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, कोर्ट हो, पोस्ट ऑफिस हो, ट्रेजरी हो, टेलीग्राफ लाइन हो, सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। एंड रात ही रात में they moved to Meerut and next day morning they reached to Red Fort. Red Fort पहुंच के बहादुर शाह जफर को अपना राजा बनने के लिए उन्होंने कन्विंस किया to lead the rebellion. They wanted a leader and they saw the potential in Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar was quite convinced by the peasants, and further he took this as an opportunity to fight against the British. The soldiers kind of proclaimed Bahadur Shah Zafar as the emperor and their ruler, right? And then further, what happened? The ordinary people started joining the rebellion, and in major towns like Lucknow, Kanpur, Bareilly, money lenders and the rich people who were exploiting the Indians were attacked because they were seen as somebody who were loyal to the British, and unko
जो लोकल मासेस है उनका गुस्सा झेलना पड़ा, ठीक है। और ये धीरे धीरे एक पूरा रेबेलियन बन गया। मंथ जो था मई और जून के मंथ में ब्रिटिश वाज totally confused and they did not had any plans to suppress the revolt. They were not able to understand कि करे तो करे क्या। कहीं ना कहीं there is a popular quote that has been given by a British officer जो बोलता है कि भैया जो पूरा रूल था वो कहीं ना कहीं कार्ड्स के जो हाउस थे उसके गिरने की तरह हो गया, राइट। पत्तों पे बना जो ताश के पत्ते होते हैं उन पे बना हुआ जो घर था उसकी तरह पूरा बिखर गया। And what has been the best part is there was planning and coordination among people. ऐसा नहीं था कि नहीं था, वो planning and coordination to the best नहीं था, लेकिन planning and coordination था। Similar चीजें बहुत सारी जगह पे इकट्ठे होने लग गई थी, right? Then we have understood what are the rumors and role played by the rumors and prophecies. So if you see काफी रूमर्स थे। पहला वाला ग्रीस्ड कैटेज वाला रूमर, फिर आटे में द काउ एंड पिग बोन डस्ट वाज मिक्स्ड, दैट वाज देयर। देन देयर वाज सस्पिशन of the Christian missionaries' role, suspicion about the Western education. Then there was more discomfort related to Christian missionaries. Then the policies that was followed in India. All this has led to the ignition or the igniting the revolt of 1857। rebels और strong हो गए इन reasons की वजह से। और उसके बाद हमने पढ़ा सब्सिडरी अलायंस इन कंटेक्स्ट ऑफ अवध, ठीक है। अवध को कैसे एनेक्स किया गया सब्सिडरी अलायंस लगा के। तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस यूज करके उन्होंने अवध को एनेक्स किया, क्योंकि अवध वाज ए पोटेंशियली ग्रेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, स्पेशली फॉर इंडिगो क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप्स, ठीक है। तो डलहौजी का यहाँ पे फेमस एक कोट है, उन्होंने कहा है अवर इज अ चेरी व्हिच विल फॉल इनटू आवर माउथ वन डे, एंड इट हैपेंड, राइट। सो डलहौजी ने इसका एनेक्सेशन कंप्लीट किया था 1856 में। इनिशियली इट वाज एनेक्स्ड on the policy, using the annexation policy subsidiary alliance, some part of Awadh was captured. Later on, Nawab Wajid Shah Wajid Shah was removed from the position, stating that he was not ruling properly, misgovernance है और वो बड़ा ही unpopular ruler है ब्रिटिश के लिए, ठीक है। But actual terms में when we come on to the things, we get to know that Nawab Wajid Ali Shah was very popular ruler amongst his masses. His masses loved him, right? नवाब को हटा दिया, नवाब को एक्साइल कर दिया कैलकाटा में। And then further what happened? They started destroying the power and might of तालुकदार्स। तालुकदार्स कौन थे? तालुकदार्स rich landlords थे जो कि रूल कर रहे थे, राइट। और वो जैसे रूल कर रहे थे, they had their own army from 200 to 12,000 men were working for them. They were very powerful. They had a good relation with the peasants, although they also took revenue from the peasants. But कहीं ना कहीं एक connect बना हुआ था। तालुकदार understood the problems of the peasants and कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत support, थोड़ा बहुत वो दे देता था। But the British said that Talukdars needs to be removed from the power as they have acquired all these lands using fraud methods, corruption, right? And they have used force to kind of get snatch the land from the other people. So British said that we are going to take this land from Talukdar using Summary Settlement Act. और समरी सेटलमेंट एक्ट लगा के उन्होंने लैंड तो वापस ले लिया, उनके फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको वहां से भगा दिया, right? And finally they started assessing the peasants on agriculture. The rent was super high. The super high rent was taken from them, and wherever they said that the peasants conditions will like really improve, वो कंडीशंस खराब होने लग गई, वो कंडीशंस बहुत ही खराब होने लग गई। एंड उसकी वजह से पेजेंट्स काफी नाराज थे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हमने पढ़ा कि अवध को जहां पहले वो 30% एसेस होता था पूरा, अब वो 70% तक ब्रिटिश ने एसेस कर लिया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने अकेले ये बात को मान लिया था कि भाई हमने ओवर एसेस कर लिया अवध को, राइट। एंड देन डिस्प्लेसमेंट और क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में पढ़ा। and we'll end this class here, or we will come I will soon come up with the third part. So आज के लिए इतना ही, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। The first and second part, keep watching it again and again until you are clear with everything, ठीक है। and if you have in case any doubts you could post questions or I'll be able to help you. So see you soon, take care, bye bye।